Hello friends, welcome to our channel Decoding Investments, where we discuss how did the market pan out today and what's the outlook. So as we start, let us discuss what did we spoke yesterday. Now, what did we spoke yesterday? We discussed that Nifty is in a buying zone. Nifty was in a buying zone when we witnessed that there was a up move of around 220 points, and after that we discussed yesterday that there can be a range of 50 to 100 points, right? Nifty went up around 100 points today in the morning, and then again closed approximately 90 to 100 points during the closure of the day. So what does this candle say? Now this candle is what do I call? I can call it a typical shooting star, not with a perfect setup, but the candle, the shape of a candle itself says that it's a shooting star. Now Nifty was in an uptrend and but got sold off initially. From the top we see that there is a massive rejection which brought Nifty down to this level, right? Nifty closed around 24,480 type. It's just nearing this zone. Now after having said that, Nifty is again entering that zone where there can be a lot of demand, right? So we have to be very much careful about it, that Nifty is entering into a level to a zone which is loaded with a lot of demand, right? And but this sell-off was not solely because it was Nifty. There was a huge contribution of other factors as well. We will come to that, but before we go, let us discuss hourly candle. In hourly candle we see that this line is being supported by is held on by the candle by Nifty. So it is still finding some support around this area, right? So 24,485, right? So 24,440 region is a massive demand zone. We will have to see how this pan out, right? This is the candle. So okay, now let us think that till how far can this go? Okay, so let's look at this way, that after getting rejected, it has just closed at the end of the day. It couldn't find any further support, but there was one other catalyst, and the catalyst was Bank Nifty. We discussed that Nifty in itself is pretty strong. It has got that buying momentum, but Bank Nifty was it failed to envelop this candle failed to envelop the candle before, and we can see that it is not giving a very healthy sign. And this was precisely the reason Bank Nifty fell around 450 points. Now with a decline of 450 points, led lot of pressure to Nifty. Nifty did try to fight it out, but it became difficult. Why? Because see, Bank Nifty has around 35% weightage in Nifty. So the heaviest of all the index contribution is banks. So if banks is down around 450 points, it is bound to give pressure to Nifty, which has led to this shooting star candle, right? So this is what it is. We will come to the conclusion, then we'll see that what levels to watch out for and where to buy and where to hold on, which can create a lot of demand and all. So but for now it seems like Nifty should not go below 24,400. That is what my take is, because then that demand factor will come in, and we have seen that where a lot of rejection has been there from the downside. So that will act as a pretty strong demand zone. But simultaneously we will have to see that is Bank Nifty also playing that way. If Bank Nifty is not able to sustain this level, if it is breaking this, then it becomes really difficult for us. We can, it's like Nifty long and Bank Nifty short. It does feel like this way. So if this level is gone, from where it has received two massive support, and the downside has been rejected. So if this 55,000 levels are gone, then it becomes very difficult for us to make any kind of judgment there, right? So next we will come to okay, let us look at HDFC Bank chart now. See, this is what is happening with HDFC. It is in this range itself,
that is the range of around 1950 or 60, right? But it is not able to go up. There's massive rejection whenever it tries to break this range. It has tried multiple times, that is around 1995 2000 levels. Whenever it has tried to surpass that, it is facing massive rejection. So till the time HDFC Bank doesn't supports the Nifty Bank Index, till then it will be very difficult for our Bank Nifty Index to move up. So one has to be pretty much watchful for that. It was again down around 25 rupees today. So this is a massive rejection from the top side, from the upside. So this it has to hold this level or pass this level, then only we can be sure that Bank Nifty is going to go up, right? So, and Reliance on the other hand, let us look at Reliance. Reliance is sort of a buy on dip. Reliance, the way the candle looks, it's also sort, what do you say? It is panning out that okay, there was a massive rejection from the top, but from the bottom as well, we saw that there was some buying that propelled the candle not to close at the low of the day. So from this level, we see that around 1376 level, it is inched up and managed to close at around 1380 type, 1375-80 type. It has closed. So Reliance looks okay, buy on dip type, but HDFC is looking very bad. It's looking very out of shape. So with these two, the reason why I'm discussing these two stocks is these are the most heaviest of the stock and have a lot of contribution in Nifty and Bank Nifty, right? So on one hand, when Reliance is trying to support the Nifty, HDFC on the other hand is trying to violate the levels. So we will have to have a watch out here how this HDFC, ICICI of the world behave, and what is the overall market mood, and how does the price action goes there, right? Now let us come to the other things that we track. We track these data points, and they are right here. So FIIs selling calls, buying puts, HNIs selling calls, buying put, retail is buying calls and selling puts. So these two are negative, right? And this is positive, right? So these suggest that there might be up move today, but that might tomorrow there might be some up move tomorrow during opening, but that might get sold off. Why? Because these are negative, right? Now overall, we know that FIIs have been negative since quite some time. They are selling 87 lakh calls and then 2.5 lakh puts they are long. Same is the case with HNIs. We see that 7,000 calls sold and 1.93 puts buy. They are long on put, and call again here is they have sold their retail is long call by 24,000 and put short around 5 lakh. So this is a huge number. I don't know. I mean, I probably retail is trying to think that there has to be some pullback or some short covering, and they are adding on to it. I am not very sure about that. So this is very dangerous as well. So in net, we can say that today's price action suggests that FIIs and HNIs are short, and but retail is long. Next is FIIs and HNIs on overall basis, OI basis, they are short and retail is long. Now quickly let us go to the FII activity. We know FIIs have shorted index again, right? They are shorted to the tune of 185. So that is fine. They are short index. They have shorted index. DIA are flat. HNI have added to their longs, and retail has also added to their longs index. So that is what it is. Cash activity does suggest that they sold around 3400 crores of cash in the cash market, and index wise we know that they are short 1000, fresh addition of 1000 crores of index short. Now if we break this up, we see that Nifty is short heavily, and Bank Nifty again is short heavily. Around Nifty is 676 crores, Bank Nifty is 214 crores, right? So after this we will just discuss how the other things pan out
For example, let us see. Okay, this option change that we are going to discuss. अब हो क्या रहा है यहाँ पे, हो यही रहा है कि यहाँ पे तो निफ्टी में मुझे लग रहा है कि 24,400 पे एक मैसिव पुट राइटिंग है 85 लाख की, और आपका 24,400 पे 21 कॉल पे 21 लाख 22 लाख मान लेते हैं, 22 लाख की कॉल राइटिंग है। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा नीचे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ये देखें कि पुट राइटिंग जो है, पुट राइटिंग थोड़ी गिरी तो है, बट यहाँ पे एक मैसिव एक पुट राइटर खड़ा है, दैट इज अराउंड 24,400 पे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कोई पुट राइटर इसके नीचे डिक्लाइन नहीं किया है। अगर हम ओआई देखें तो दे हैव नॉट फॉलन मच, बहुत ज़्यादा कोई डिक्लाइन नहीं किया है। और कॉल अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो कॉल आप ये देखो 21% तक का आपका ओपन इंटरेस्ट डिक्लाइन किया है 24,350 लेवल्स, और एक बहुत छोटा सा स्ट्राइक है 24,300 लेवल्स, वहाँ पे 7 लाख का कॉल डिक्लाइन किया है। तो मुझे लगता है कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंदर जाके उन्होंने कॉल राइटिंग नहीं की है। I'll tell you the reason। मैं वो इसलिए मुझे लग रहा है कि अगर आप बैंक निफ्टी में हम देखें, एक सेकंड जस्ट गिव मी अ सेक, या बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में ये देखो, ये है ना, दिस इज वो अंदर जा करके यहाँ पे लोगों ने काफी ज्यादा पुट राइटिंग की है। तो ये मुझे थोड़ा सा ट्रबलसम लग रहा है, जहाँ पे ये बैंक निफ्टी थोड़ा भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। And जैसे मैंने कल कॉल पे कहा था दैट फॉर निफ्टी टू मूव अप देयर हैज टू बी सम सपोर्ट वाया बैंक निफ्टी। वो बैंक निफ्टी से थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए, वो अभी नहीं दिख रहा है बिल्कुल। हमने कहा था कि जस्ट रिजेक्ट बैंक निफ्टी। तो कोई भी अप मूव आएगा अगर बैंक निफ्टी में, देन ओनली निफ्टी आगे ऊपर जा सकता है, अदरवाइज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक अगर वो अप मूव आया भी तो लिमिटेड अप मूव रहेगा, क्योंकि उसको अगर बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि निफ्टी आपका 500 पॉइंट ऊपर चला जाए और बैंक निफ्टी 50 पॉइंट या 100 पॉइंट ही ऊपर रहे। बैंक निफ्टी हैज टू बी देयर फॉर निफ्टी टू इंच अप, और हम ये देख रहे हैं कि अंदर ज्यादा करके यहाँ पे उन्होंने पुट की राइटिंग की है। ठीक है, तो वी विल हैव टू सी कि कल कैसा होता है, पर अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि थोड़ा सा एक रेंज बाउंड अफेयर हो गया है, जहाँ पे निफ्टी तो लिमिटेड डाउन साइड है पर बैंक निफ्टी काफी ज्यादा डाउन है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, नाउ लेट अस डिस्कस द ओपन इंटरेस्ट डेटा। अब ओपन इंटरेस्ट डेटा में यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है, हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑल दिस ग्रीन बार्स, ये देखिए नीचे द चेंजेस लाइक यहाँ पे काफी ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है। ठीक है, पुट राइटर्स हैव गॉन, जो कल पुट राइटर आ गए थे वो यहाँ से जा रहे हैं, कॉल राइटर बढ़ते जा रहे हैं, पर एक मेजर है 24,000 पे काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर खड़ा है, और उसके बाद यहाँ पे 24,300 24,400 पे भी काफी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर खड़ा है, पुट राइटर खड़ा है। सो ये हमें कल देखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ वी नीड टू सी द अदर फैक्टर्स। ओके, आज भी ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मूव इन डाउ जोन्स, 460 पॉइंट ऊपर है। Let us see how this translates into tomorrow's move for Nifty। ठीक है, अब हमें ये देखना है, we'll have to see। या अभी क्या हुआ, स्पॉट लेवल क्या था 24,487। ठीक है, जो अराउंड 0.4% डाउन था, और फ्यूचर 0.32% डाउन था। ठीक है, तो मैं ये तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फ्यूचर में थोड़ा सा शॉर्ट बिल्ड हुआ होगा, पर बहुत मैसिव बिल्ड नहीं हुआ है, नहीं तो ये काफी ज्यादा डाउन होता, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा स्टेबलाइज कर रहा था, इट वाज ट्राइंग टू कैच अप फ्रॉम द बॉटम, बट बार बार ऊपर से सेलिंग आ रही थी बैंक निफ्टी की। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है कि यहाँ पे अराउंड कॉन्ट्रैक्ट 0.88% बढ़ा है। ठीक है, सो देयर इज सम शॉर्टिंग इन निफ्टी हियर। अब हम यहाँ पे देखें तो अगेन ऑल दी स्ट्राइक्स 25,000 पे 1.57 करोड़ ओपन इंटरेस्ट है, और ये सारे कॉल एडिशन हुए हैं, मतलब 25,000 से लेकर 24,500 तक काफी स्ट्रॉन्ग कॉल एडिशन हुआ है। और पुट पे अगर हम देखें तो पुट गिरा है, 24,000 पे पुट ऐड हुआ है, और ओवरऑल अगर हम देखें तो पुट गिरा है। ठीक है, तो माई टेक इज के फर्स्ट आवर को हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर फर्स्ट आवर थोड़ा स्टेबलाइज करता है, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ स्टेबलाइज करता है, तब हम शायद नेक्स्ट हाफ के लिए एक मूव ले सकते हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है कि 24,400 शुड बी अ रेंज, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आनी चाहिए। 24,400 जो हमारे पास है, वो 24,400 से 24,200 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आनी चाहिए, जो निफ्टी को सपोर्ट करेगा। ठीक है, और अगर ये किसी भी हिसाब से 24,600 के ऊपर जाता है, देन इट विल बी शॉर्ट कवरिंग।
तो ये 24,200 टू अराउंड 24,400 शुड बी एक्ट एज अ सपोर्ट, ठीक है। और ये नीचे जो है ऊपर जो है 24,600 अगर तोड़ता है तब जाकर कुछ एक शॉर्ट कवरिंग हम देख सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल पीसीआर जो है 0.81 है, सॉरी पीसीआर नियर एटीएम है 0.81 और ओवरऑल 0.65 है। बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी इज प्रीटी इंटरेस्टिंग। अगर आप देखें यहाँ पे तो बैंक निफ्टी अभी तो अराउंड 200 पॉइंट के आसपास, 220 पॉइंट के आसपास फ्यूचर ऊपर है और डेज ओआई में 3.5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। दैट मीन्स 3.5% शॉर्टिंग बढ़ी है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। दैट इज व्हाट वी डिस्कस यस्टरडे एज वेल। अब हमें ये लग रहा है कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट, बैंक निफ्टी भी अपने काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन के आसपास आ गया है, 24,800 55,000, ठीक है। तो ये एक क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये इसको तोड़ता है देन इट माइट प्रेशराइज निफ्टी टू गो बिलो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट इज। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रीमियम कितना चल रहा है, दैट इज अगेन आप ये मान लो 150 पौने 200 पॉइंट का निफ्टी अगस्त फ्यूचर का प्रीमियम चल रहा है। तो निफ्टी में तो लॉन्ग है, देयर आर पीपल हु आर लॉन्ग इन निफ्टी। निफ्टी में बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट शेड नहीं हुआ है, पर बैंक निफ्टी में इट इज वेरी डिफिकल्ट। 3.55% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये है, दिस इज आवर टेक। नाउ what is the overall take? Overall take is wait for 24,400 to sustain till first half, ठीक है, and bank nifty to hold 55,300, then we can expect some up move। ये है, अगर 24,400 फर्स्ट हाफ तक वो सस्टेन करता है और बैंक निफ्टी 55,300 के आसपास तक होल्ड करता है तब जाकर के हम कुछ अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देन वी कैन थिंक अबाउट शॉर्टिंग द मार्केट, ठीक है। बट बी वॉचफुल, आपको शॉर्ट करना है बैंक निफ्टी, निफ्टी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि निफ्टी इज अगेन ट्राइंग टू एंटर इनटू दैट हेवी डिमांड जोन जहां पे एक अपटिक हो सकता है। और माई टेक इज कि थोड़ा इधर होने के बाद, थोड़ा उधर होने के बाद बैंक निफ्टी शायद ऊपर आ जाए। देयर विल बी अदर इंडेक्सेस लाइक आईटी एंड ऑल व्हिच इज गोइंग टू सपोर्ट निफ्टी टू मूव अप, ठीक है। नाउ लेट अस कम हियर एंड थिंक, लेट अस सी दिस। यू सी डाउ जोन्स का ये चार्ट है, इसकी ट्रेजेक्ट्री फेल ही नहीं हो रही है। आई मीन आई डोंट नो व्हाट मिस्टर ट्रम्प हैज डन। मतलब ऐसा लग रहा है कि उनकी पॉलिसी काफी पसंद आ रही है मार्केट को एंड इट इज जस्ट नॉट फॉलिंग। अच्छा, एक और बात, कल एफओएमसी का भी एक मिनट्स का मीटिंग है, सो वो हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वहां पे जाकर के उनके पास ये आ सकता है। लेट मी जस्ट डू इट दिस वे, एक सेकेंड, नो नॉट दिस। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि एफओएमसी का कल है क्या। एफओएमसी हाँ एग्जैक्टली, एफओएमसी का कल क्या है। एफओएमसी अराउंड 14 तारीख को इंडिया का इन्फ्लेशन आया है। आज मैंने देखा कि इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आया है, दैट इज वेरी गुड, ठीक है। वो अराउंड 2% के आसपास आया है, 2.7 आया है, 2.7% आया है। 14 तारीख को जॉबलेस क्लेम डेटा आने वाला है आपका यूएस का, सो दैट इज समथिंग विच मार्केट विल वॉच आउट फॉर, ठीक है। तो ये है। अब अगर हम इंडेक्स आईएनआर को देखें, हाँ ठीक है, ये एक ही रेंज पे चल रहा है। अगर ये इसको तोड़ता है तब कोई बात बनेगी मीनिंगफुल विच इज हेल्पफुल फॉर इंडिया, अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें रेंज या फिर बहुत ज़्यादा कोई वॉलेटिलिटी नहीं दिखने को मिल रही है, ठीक है। लेट अस कम टू क्रूड इज फॉलिंग, वी नो द स्टोरी बिहाइंड क्रूड। तो क्रूड पे ज़्यादा कुछ हमें चर्चा करने के लिए है नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि कहीं 65 के नीचे भी ना चला जाए, 60 के नीचे भी ना चला जाएगा। 60 के नीचे चला जाएगा देन वील हैव टू थिंक ट्वाइस। क्यों? क्योंकि अगेन आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे कि वहाँ पे कुछ एक कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमी हो सकता है। ग्लोबल की बात कर रहा हूँ मैं, कि विच इज अफेक्टिंग द सप्लाई, विच इज अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ क्रूड ऑयल, राइट। सो द टेक इज वी नीड टू बी वॉचफुल। 24,400 अगर फर्स्ट हाफ तक थोड़ा सा सस्टेन करता है, ठीक है, एंड वील हैव टू सी द कलर ऑफ सस्टेनेंस कि वो कैसे सस्टेन कर रहा है, व्हाट आर द पार्टिसिपेंट, ठीक है। और बैंक निफ्टी अराउंड 55,300 जब सस्टेन करता है देन वी आर गोइंग टू गो लॉन्ग, अदरवाइज वी विल वेट एंड वॉच। सो दैट इज आवर कॉल फॉर टुडे and thank you for watching, and I am looking forward to your support and your comments very heartedly। मुझे वो काफ़ी help करता है। I request you to please subscribe the channel if you have not subscribed yet, and I also request you to please like and share your comments। So that is all from my side. Thank you and thanks for watching.